Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty has closed at 18,642 levels, and uh, which is almost lower by 58 points. So during the last 3-4 days, the Nifty has been correcting from the high of 18,887, and recently it made a low till 18,577. So we believe that 18,500, 18,400 are the lower side support zone from where again the volume should pick up. So the bias for the Nifty is positive, and declines closer to this support level should be viewed to add long positions. So in yesterday's session, only the on the sectorial front, the PSU bank was the only one counter which was in positive. Rest most of the counters traded with negative bias. So coming to the levels, during this current week, the Monday's high was at 18,728. So we believe that whenever this high will be 18,700 will be taken out, we will see again the momentum will be back in action, and the Nifty should be heading towards 19,000, 19,200 levels on the higher side. The bias remains positive. Coming to Bank Nifty, what we are observing, it has been consolidating in the range for the last 10 days, and this range has been in the 1,000 odd points. So there is not much decline in the Bank Nifty. So looking at the chart pattern, we believe that as long as 43,000 levels are held, we are going to see the upside momentum. Only if 43,000 levels are broken, then there will be a little bit of loss of momentum, which can drag it to another by 500, 600 points on the downside. However, on the upside, if 43,400 levels are taken out, then we believe 44,000, 44,500 should be the upside range for the Bank Nifty. With both the indices, we maintain a positive view. Decline should be used as a buying opportunity. Uh, Coming to derivatives data, in derivatives, Nifty futures has seen a long unwinding in yesterday's session to the tune of 2.21%, which was a reduction of 28.87 lakh shares. The PCR is also below 1% at 0.90 levels. The major additions were seen at 19,000 call options by 10.20 million shares, and then 18,800 call options by 96.24 million shares. On the put front option, 18,600 put by 75.05 million shares, and 18,500 put option by 57.81 million shares. Coming to Bank Nifty, even the Bank Nifty has seen a long unwinding in the yesterday session to the tune of 7.06% decrease in OI, which is the reduction of 2 lakh shares. The PCR has also come below one level to 0.84. The major additions were seen at 43,000 put option at 36.85 million shares, and then 43,500 call options by 28.17 million shares. The top three long build-ups were SBI Life, HUL, and PNB. The top three short build-ups were IRCTC, Coalpal, and Dr. Reddy. Coming to FI data, so in yesterday's session, FIs has sold 15,461 contracts in index future, and the long short ratio has come from 65 to 61.75. So a little bit of decline. We maintain that as long as long short ratio is above 50, the market is in a positive zone. So lastly, the crude has slipped below 80 levels. So below 80, the next level, or directionally, it can go back to 68. That is the next level. So crude coming down will be benefit for the OMC, tire stocks, and the paint stocks. So that's all from my end. I'll hand over to Bunty sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, sir. Good morning, team. Few updates from our side. Firstly, on the few news. Firstly, on the Zensar. Despite fears of recession, the global tech spend is expected to grow by 11% in the next year, thus providing growth opportunities for the Indian IT firms. In addition, we do not expect any negative surprises in terms of furloughs despite challenging environment. Hence, we believe the company is well poised for registering revenue growth in the medium to long term. Further, management has undertaken various measures to address the supply side challenges and improve utilization levels. This, coupled with calibrated price hikes, improving utilization rates, and pyramid optimization, will drive the margins for the company. Hence, we have conservatively built in revenue CAGR of 10%
and PAT CAGR of 38% from FY23 to FY25 respectively. The recent fall in stock prices has prompted us to upgrade our rating from hold to buy. So we are very much positive on the Zensar with a target price of 280 rupees. Next is on the Maruti. Maruti Suzuki has said that it will recall a total of 9,125 vehicles manufactured between 2nd and 28th November 2022. It is suspected that there is a possible defect in one of the child parts of shoulder height adjuster assembly of front row seat belts, which is in a rare case may lead to a seat belt disassembly. So the affected models are Ciaz, Brezza, Ertiga, XL6 and Grand Vitara. Considering the safety of the customers, company will replace the faulty part and with a free of cost. So this seems to be a slightly negative sentimentally with respect to the Maruti stock. Next is on the Dabur. Dabur plans to enter India's feminine care market. Currently, market is dominated by multinational players like P&G, Johnson and Johnson, and Unicom. Company's new product under the Fame brand will compete with P&G's Whisper and Johnson and Johnson Stay Free. Dabur will launch the product initially through e-commerce platform like Flipkart before rolling it out at other channels, especially modern trade. Currently, we are bullish on the Dabur with a buy rating on the stock with a target price of 682 rupees. Next is on the Ircon. Ircon International, the company has announced that they have won an order for procurement of design, installation, testing, commissioning and certifying of signaling and telecommunication system from Maho Junction to Anuradhapura by Sri Lanka Railways under Indian line of credit at rupees 122 crores. So that seems to be very much positive with respect to the Ircon International stock. Uh, Next is on the Siemens. The company has announced that they have emerged as the lowest bidder for the 9,000 HP electric locomotive project in Dahod, Gujarat. So this announcement seems to be very much positive with respect to the Siemens stock. Lastly, today RBI will announce its MPC announcement, and the expectation is that RBI could hike the repo rate by 35 bips because of the global inflationary expectation and global headwinds. Also, more importantly, beside the rate hike, the more focus will be the commentary of the RBI on the GDP and the CPI trajectory for full year FY23. As we have seen, the CPI inflation data, which has come in the month of October, is much better or much lower than the high of 7.8% in the month of April 2022. So that's it from my side. Over to you, Vikas. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. Further news update. Aditya Birla Fashion is now the front runner to acquire TCNS Clothing Company, owner of the listed women's branded apparel retailer that owns brands such as W, Leven, and Aurelia. Manipal Health Enterprises, Max Healthcare, Temsec owned Shears Healthcare, and global buyout funds Blackstone and CVC Capital are among half a dozen potential buyers in initial talk to acquire about 65 to 70% in KIMS Health Management, valuing Kerala's leading hospital chain about 3,500 to 3,700 crore. The World Bank, in its India Development Update, has upgraded the forecast for the Indian economy to 6.9% from 6.5% earlier in the current fiscal year. Karur Vyasya Bank has raised the marginal cost of funds-based lending rates (MCLR) across tenure by 25 basis points. The new rates will be effective from December 6, 2022. Consumer Goods firm Dabur said on Tuesday that it plans to enter India's feminine care market, which is dominated by multinationals Procter & Gamble, Johnson & Johnson, and Unichem. Thank you, everyone. Over to you, sir. Good morning, team. Government has said it is likely to lease out 11 more airports very soon. Due to COVID-19, this was delayed. Now this will start happening.
SDFC AMC 10.21%. Abradin will sell the stake. They were once a promoter. Now they are selling stake. Zindal Stainless Steel, we have been positive on the company. Yesterday, the stock was up 7%. There was one block deal which happened yesterday. So we remain positive on the stock. We expect another 12 to 18% upside from current level. India's 12 major port handled 61.3 million tons in November. It was up by 8.78%. But it is a very slow growth, compared to previous years or previous month also. Starting from October, November, these 2 months have been done. It is due to lower international trade. GMR Airport and NIIF, now they have announced a partnership to work in 3 airports, where NIIF will invest 331 crores in upcoming North Goa airport, Mopa. One more airport is likely to come in Andhra Pradesh, Bhogapuram. Cement stocks are in focus. Now there is a talk of price hike. So ACC, Ambuja Cement, Free Cement, Ramco Cement, JK Cement and JK Lakshmi Cement, Ultratech. These are few stocks which are looking very good. Tata Power now is one more stock which is looking very good. NHPC, NTPC, Shriram Transport Finance. Now their merger is almost complete. So that is something which will be positive for Shriram Transport Finance. I think some upside is possible in this company also. Airtel has launched World Pass 1 pack for travel across 184 countries, and company says this pack would be economical compared to the local connectivity abroad. We have been positive on Bharti Airtel. It is correcting now. Any correction would be an opportunity to buy. This is for 2 to 3 months traders. It is very attractive. Gravita India starts aluminium recycling plant in Togo, West Africa, with annual capacity of 4,000 metric ton per annum. This is a phase 1, and this would bring additional revenue of 60 crores to the company and a gross margin of 26%. Krishna Diagnostic informed that company has operationalized one diagnostic center as a part of agreement with Department of Medical, Government of UP. So we are tracking Krishna Diagnostic, but diagnostic as a sector is not performing. Already there is an update on Siemens. Now it is a huge order, 1,200 electric locomotive and 20,000 crores order. We have been positive on capital goods stock, Siemens, ABB, and Cummins are our topic. We even like Braj Industries. There was one report which said that Tata Power can replace HDFC Limited when the merger takes place between SDFC and HDFC Bank. And index rebalancing will happen. Till now, the analysts are saying there won't be any change in the NIFTY composition, but the merger of HDFC Limited and HDFC Bank, one stock should come in to replace the HDFC. So Tata Power is the number 1 there. The other stocks are LTI Mindtree, Pidilite or Ambuja Cement, but Tata Power has the highest weightage as of today. But we have another 4 or 5 months for the merger process. So before that, anything can change. Today we have RBI policy, and tomorrow we have state election results. So market will be volatile, be stock specific, but the momentum or the trend is up. So that is something we need to watch. In tire, we like Apollo Tire, and tire stock, any correction would be an opportunity to buy. With that, over to you, Hitendra. Thank you, sir, and good morning, everyone. I'm Engineer Patel.
स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट जल्दी से लीज करने वाली 11 एयरपोर्ट को। बेसिकली पहले उनको कोविड के पहले करना था, बट कोविड के चलते वो कर नहीं पाए, तो वो अभी उसके कदम उठा के उससे वो लीज कर रही है। सेकेंडली हम देखेंगे तो HDFC AMC में एक ब्लॉक डील होने वाली है। जो अपने दिन का स्टेक है वो 10.21 का पहले अपने दिन को प्रमोटर थे, तो वो अपना पूरा स्टेक सेल कर रहे हैं। जिंदाल स्टील में हम पॉजिटिव है, 7% का एक कल ब्लॉक डील हुआ था, उसके बाद भी हमें लगता है यहाँ पे 12 to 18% के लिए अपसाइड आगे भी जगह रहती है। अगर हम देखा जाए तो GMR इंफ्रा और NIF ने एक टाई अप किया है, वे 3 एयरपोर्ट्स डेवलप करेंगे नॉर्थ गोवा में, आंध्र प्रदेश में। उसमें NIF जो है 331 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट सीमेंट के सेक्टर्स में भी कल हम देख रहे थे सीमेंट की प्राइस हाइक्स हो सकती है, तो इसके चलते जो सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी हमें रन अप दिख सकते हैं, जैसे ECC, अंबुजा, अल्ट्रा सीमेंट, रामको सीमेंट, JK सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। टाटा पावर, NHPC और NTPC ये स्टॉक्स है पावर सेगमेंट में, ये भी हमें अच्छे लग रहे हैं। SRT फाइनेंस भी हमें लग रहा है यहाँ से जैसे इनका मर्जर कंप्लीट हो जाएगा और SRT फाइनेंस में थोड़ी स्टेबिलिटी आती दिख रही है, और यहाँ से अपसाइड थोड़ी और पॉसिबिलिटी रहेगी। एयरटेल ने लॉन्च किया वर्ल्ड पास 1। बेसिकली ये 84 कंट्रीज को करेक्ट करेगा, सिंगल कार्ड पे रहेगा। सो बेसिकली ये इकोनॉमिकल पास रहेगा और लोकल पीपल के अब्रॉड को कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाएगा। और एयरटेल में हम देख रहे हैं थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, बट ये करेक्शन अगर ट्रेडर्स के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 महीने के लिए अगले उन्हें ये बाय आउट कर सकते हैं इस करेक्शन में भी। ग्रेविटा इंडिया ने अपनी एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग प्लांट है जो कि स्टार्ट कर दिया वेस्ट अफ्रीका में। 4 MTPA का इसके ऊपर टोटल ये प्रोडक्शन रहेगा और एडिशनल रेवेन्यू 60 करोड़ रुपए का वो जुटाएगी 26% के आसपास का। कृष्णा डायग्नोस्टिक ने भी एक नया डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ स्टार्ट किया है। ओवरऑल डायग्नोस्टिक सेंटर्स में थोड़ा हम इसे ट्रैक कर रहे हैं, बट ये सेगमेंट थोड़ा सा भी वीकिश चल रहा है। सीमेंस को जैसे सीमेंस के लिए कंपनी जो है लोएस्ट बिडर इमर्ज हुई है 9000 HP इलेक्ट्रिक मोटर्स में, और ये प्रोजेक्ट दाहोद गुजरात में रहेगा। टोटल 20,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करेगी। इसी के साथ देख रहे हैं अगर कैपिटल फ्लोर में हमको जाना है तो क्यूमेंस इंडिया में हमें अच्छा लग रहा है, प्राज इंडस्ट्रीज जो है वो भी अच्छी है। और टाटा पावर हमें लगता है ये HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का जब मर्जर हो जाएगा तो वो उसे रिप्लेस कर सकता है। वो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट टाटा पावर है। सेकेंड अगर देखा जाए तो LTI माइट्री है, थर्ड पेडिलाइट है, फोर्थ अंबुजा है। और ये अभी मर्जर को भी 5 से 6 महीने की बात है, उसके बाद ही ये होगा। जैसे हम देख रहे हैं कल RBI पॉलिसी है, आज RBI पॉलिसी है। सो हमें एक्सपेक्टेशन है 35 बेसिस पॉइंट्स के अराउंड के आसपास रहेगा, और फोकस हमारी इसके पे बेसिकली कमेंट्री पे रहेगी और GDP और CPI का क्या ट्रैजेक्टरी वो देता है, मेन फोकस उसी पे रहेगा। और नेक्स्ट डे हम देखा जाए तो स्टेट इलेक्शन रिजल्ट है, तो अगले 2 दिन देखा जाए तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी मिल सकती है, मार्केट थोड़ा एक्शन पैक रहेगा, तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। टायर सेक्टर्स भी हमें अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर देखा जाए तो अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में हमें फोकस करना चाहिए। सॉरी, एयरकॉन को दिखा तो कंपनी ने एक ऑर्डर वॉन किया है डिजाइन, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कमीशन के लिए। ये माहो जंक्शन अनुराधापुरा श्रीलंका रेलवे से मिला है। क्रेडिट देखा जाए तो $14.89 मिलियन का है, जो कि 122 करोड़ का है। डामर प्लान कर रहा है इंडियन के फेमिनिन मार्केट में एंटर करने के लिए। सबसे पहले देखा जाए तो ये डोमिनेट करता है प्रॉक्टर गैम्बल और जॉनसन जॉनसन और यूनिकॉम जैसे कंपनीज। कंपनी अपना नया प्रोडक्ट फेम के साथ ला रहा है जो कि PNG का विस्पर और JNJ का स्टे को कंप्लीट करेगा। ये इनिशियली पहले फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करेगा, फिर धीरे धीरे बाकी जो ऑफलाइन चैनल्स को भी स्टार्ट करेगा। सो करंटली हमारी इसके बाद बाय रेटिंग है 682 के प्राइस टारगेट के साथ। मारुति अपनी 9125 व्हीकल्स रिकॉल करने वाला है, जो कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर हुई थी 2 से 28 नवंबर के बीच में। उन्हें सस्पेक्ट है कि इसमें डिफेक्ट है चाइल्ड पार्ट शोल्डर हाइट एडजस्टर, जो कि असेंबली फ्रंट रो सीट्स में रहती है, जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है, बट ये डिफेक्ट दिख रहा है। तो इसमें जो मॉडल्स है वो सियाज है, ब्रेजा है, अर्टिगा XL6 और ग्रैंड विटारा है। सेफ्टी की कंसर्न चलते कंपनी इसे जो है 40 पार्ट को रिप्लेस करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ। सेंसर के ऊपर एक हमने कंपनी अपडेट दिया है, जैसे हमें लग रहा है जो कि रिसेशन का फियर और जो ग्लोबल टेक स्पेंड है वो रिसेशन का फीस कम हो रहा है, जो कि ग्लोबल टेक स्पेंड है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो 11% है कि नेक्स्ट ईयर के साथ, और अपॉर्चुनिटीज ग्रो होगी इंडियन IT फर्म्स के साथ। बट हमें लगता है कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं रहेगी, जो कि फॉलोअर्स के लिए है डिस्पाइट बट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेंगे। तो भी इसके साथ हमें लग रहा है मैनेजमेंट ने भी वेरियस मेजर्स लिए हैं जो कि सप्लाई साइड को और जो यूटिलाइजेशन लेवल्स को सुधारने के लिए।
सो इसके साथ हमने हमारी जो इनबिल्ट कंसर्टेडली रेवेन्यू पैट को CAGR 10% और 38% से ग्रो किया है, जो कि FY23 से 25 के लिए रिसेंट फॉल जो प्राइस के लिए आई है, तो उसे हमें अभी लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और पी जो है इसका 12 पे आ चुका है और FY25 का EPS पे देखा जाए तो जो कि हमने इसे रिवाइज किया, करंटली हमारी इसके ऊपर होल्ड रेटिंग थी, होल्ड से हमने उसे अपडेट करके बाय किया 280 के प्राइस टारगेट के साथ। आदित्य बिरला सबसे आगे रहेंगे जो एक्वायर कर सकते हैं TCNS क्लोथिंग के। ये बेसिकली वुमेन ब्रांड अपैरल रिटेलर है जो कि ब्रांड सच एज W11 और ऑरेलिया को ओन करता है। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस जो कि मैक्स हेल्थ केयर है, टमेसेक ओन कंपनी है और ये ग्लोबल बायोट फंड्स रहेंगे जो कि हाफ डजन पोटेंशियल बायर्स मिलके इनिशियल टॉक्स करें 65 to 70%, जो कि किम्स हेल्थ मैनेजमेंट जो कि केरला लीडिंग हॉस्पिटल चेन है 3,500 से 3,700 करोड़ के बीच में। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इसे इंडिया जो अपग्रेड किया है फोकस है जो इंडियन इकोनॉमी को टू 6.9% जो करेंटली 6.5% है फिस्कल के लिए। करूर वैसे बैंक ने भी एमसीएलआर फंड्स को अक्रॉस 25 बेसिस पॉइंट हाइक किया है। ये नए रेट 6 दिसंबर से लागू होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल। यू मे नॉट